Hello students. Now we will be discussing how to calculate electrostatic potential. Electrostatic potential at any point due to a point charge. Point charge. Okay. Suppose we have a charge plus Q. Okay. This is a point J. At this point, we have to calculate the value of electrostatic potential due to this particular charge. Now go back to definition. What definition said? Electrostatic potential. Okay, electrostatic potential at any point. याद किया था कल? See here. Electrostatic potential at any point. Okay, electrostatic potential at any point is equal to और ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, is equal to amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to the point, keeping it always in equilibrium without acceleration, constant velocity. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, performing minimum work done. Okay, तो we are taking it ahead now. Okay, और इसकी बात करेंगे. ठीक है, डेफिनेशन आपको पता चल गया. तो अब हमें करना क्या है? व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू, इंफिनिटी से उठा के एक टेस्ट चार्ज को J तक लेके आना है. ओके, और ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक मिनिमम वर्क हो. यहां से यहां तक when that charge is coming, test charge is coming, it should always be in equilibrium. It should not be accelerating. It should be coming with constant velocity. Okay, a test charge is to be taken from here to here. So when that charge was coming from here to here without acceleration, with constant velocity, okay, ठीक है, चलते चलते उसका हाल पूछते हैं. तो क्या होगा? Let this particular distances R, ये वाला J point is at distance R. This is point O. Okay, and this point at which we are checking the situation of the test charge. Okay, this is your test charge which is coming from infinity to the point. Okay, this particular point is say P. Okay, now this particular point is at a distance x. Fine, ठीक है बेटा. Now test charge when it is at P, just see how much force is acting on the test charge and in which direction. Okay, now force acting on test charge, when it is at point P. कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q और another charge, test charge, over x square. Separation between these two point charges is x. Along किधर होगा? This will be repelling the test charge. The force due to electric field is this way. Okay, along P N. Okay, force due to electric field. F electric field along P
n vector. Fine. Now we have to bring this particular charge from here to here. Okay, so what we will be doing, we will be bringing an external agent. External agent will be applying force in this direction. Okay, force by external agent this way. How much force it will be applying? This much. ठीक है. Okay, now work is done in taking this test charge from infinity to this particular point. In this particular situation, work is done against the force due to electric field. ठीक है. Or if you talk of this particular force, as the body is coming closer and closer, the value of x will be reducing and the force will be increasing. Mean work done in taking the test charge from infinity to this particular point is done against a variable force. Okay, so as work done in taking test charge from infinity to j is done against variable electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल बी डूइंग, ये जो पूरा पाथ है, ओके, कंप्लीट पाथ इज टू बी डिवाइडेड इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स. ओके, क्योंकि फोर्स इज वेरिएबल. इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स, इसको मान लेते हैं Q. ओके, वर्क डन अगेंस्ट वेरिएबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो मुझे अब फोर्स को कांस्टेंट बनाना है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, और उस फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे कि उस लेंथ में ओके फोर्स को चेंज होने का टाइम ना मिले. फाइन. तो डिवाइडिंग द whole path in infinitely small parts, each of length dx. अब dx के ऊपर कंडीशन क्या है? dx is that small, that constant force is acting, that constant force is acting for this small length. ओके, ठीक है बेटा. यहां पे मैं dx अज्यूम कर रहा हूं रियल सिनेरियो में p to q. फाइन. p to q जो लेंथ है दैट इज dx वेक्टर. ओके, नाउ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था इधर. अगेंस्ट दिस फोर्स the test charge is taken from infinity to j. Now angle between both the forces is 180 degree. Now work done in taking the test charge from p to q. फर्स्ट ये कैलकुलेट करते हैं. अब p के ऊपर फोर्स इतना लग रहा है तो q तक इट विल बी सेम क्योंकि dx इज दैट मच स्मॉल. तो वर्क डन in taking test charge from P
2q, ठीक है। dw is equal to force electrostatic against this work is done dx, okay। now force electrostatic, okay, dx cos of 180 degree, placing all the values, okay। dw is equal to force electrostatic 1/4 pi epsilon naught, okay, q naught pi x square into dx or cos 180 minus 1। now for total work done, क्या करेंगे, इंटीग्रेट for total work done integrating both sides, ठीक है। दोनों साइड्स इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रहेगी, डिस्टेंस, लेंथ, इन्फिनिटी। हमारे इन्फिनिटी का डिस्टेंस यहां से इन्फिनिटी ही रहेगा, यहां तक लेके आना है जे तक, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना हो गया, r। तो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, dw and here is infinity to r, 1/4 pi epsilon naught q naught over x square, ठीक है। और ये साथ में आ गया आपका dx और एक ये -1। नाउ टोटल वर्क डन बन गया बेटा, -1/4 pi epsilon naught q naught, then this is x minus 2 dx, infinity to r। तो वर्क डन is equal to minus q naught 4 pi epsilon naught, and then this is x minus 2 plus 1 over -2 plus 1 फॉर्मूला है ये, ठीक है, infinity to r, and we are getting ये minus q naught over 4 pi epsilon naught x to the power -1 over -1, ठीक है, infinity to r। Is it okay? Okay. Now negative and negative will be making positive q naught over 4 pi epsilon naught, and then this is 1/x, ठीक है। 1/x को लिमिट अप्लाई किया, 1/r minus 1/infinity, 1/infinity is 0, and we are getting work done is equal to q naught over 4 pi epsilon naught, साथ में आया 1/r, ठीक। now this is just work done। now if I want this to be converted to potential, go back to definition of potential। potential is equal to work done in moving a test charge q naught, this particular term will be q naught denominator में आ गया, then q over 4 pi epsilon naught r, potential at any point due to a point charge, 4 pi epsilon naught r, okay। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल वैल्यू r, ओके। पोटेंशियल वर्सेस r का जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट इंफिनिटी इट विल बी 0। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity, as already I told you। for a positive charge q greater than 0, v will also be greater than 0, मतलब for a positive charge potential will be positive।
For a negative charge, potential will be negative. Hope this thing is clear. Go through this particular thing, okay? And then we will be grilling potential and potential difference, okay? Furthermore, it will be taking 2-3 lectures more, okay? Thank you. Have a nice day.